Okay, right. So now we will get back to our topics. So I was talking about the difference between the basically I wanted you to know the difference between the first order transformation and second order transformation. So now I am gonna draw some of the graphs between first order transformation and second order transformation. And these comparison is so important that it was asked to me during my DRDO interview in the year 2022. Okay, so please take a pen and paper and draw these three graphs comparing the first order transformation and the second order transformation. Okay, we will do the reasoning now, but first I will draw the graphs, and I recommend all of you to draw it with me. Okay. So on the x-axis, we are basically having temperature, and on the y-axis, we are having various thermodynamic parameters. So first order transformation is like this. Okay. Uh, so So these are all the critical temperature points after which the transformation is going to take place. So talking about the second order transformation, how the graph will look like. Yeah, you tell me. Okay, so the candidates now, you tell me. Like in the first order transformation, the graph between free energy and temperature at T is equal to Tc, that is at the critical temperature, the graph of the free energy is changing drastically. You see, the slope is changing drastically. So if I talk about the second order transformation, will the change in the slope be this drastic or it will be more gradual? क्या एकदम से बदलेगा या धीरे धीरे बदलेगा और क्यों? This is a very important part. क्यों? Every time you draw a graph, you see a picture, ask yourself ऐसा क्यों होता है? Tell me, in second order phase transformation, any intelligent student of this class tell me कि एकदम से change होगा या gradually change होगा? Come on. Guys, am I audible? अच्छा, guess it, just guess it, right? Just guess it कि क्या I guess I'm sharing my screen also, right? हाँ. So just tell me, like, will it be more gradual or will it be a drastic change in the slope? Anyone? Sachin, RJ, Altaf bhai, रियल मी RMX 3381. अरे भाई, इलॉन मस्क का बेटा है क्या? यार नाम लिखा करो, मोबाइल का नाम है। अद्रीजा,
Papun Kumar, OP minded. Tell me. Will this change in the case of G? It will be drastic as the case of the first order transformation, or it will be more gradual, and why? Sir, can you explain the difference between first order and second order transformation? Okay. See, whenever I talk about the first order transformation and the second order transformation, हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि there are certain parameters, for example, liquid to solid. That transformation is considered under the category of first order transformation. And when I say that, if I talk about magnetic transformation, paramagnetic to ferromagnetic, then that would be considered as an example of second order transformation. तो आप देखो, जहां पर भी आपका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में या एटॉमिक अरेंजमेंट में ड्रास्टिक चेंज है, दैट इज कंसिडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन. एंड इन दोज केसेस वेयर no much change in atomic arrangement is there, that is considered as a second order transformation. Okay. Acha, tell me, precipitation will be a first order transformation or a second order transformation? Come on. Anybody? फर्स्ट Precipitation will be a first order हाँ हाँ हाँ. फर्स्ट ऑर्डर क्योंकि लिक्विड से सॉलिड हो रहा है ना, मतलब प्रेसिपिटेट सॉलिड हो Precipitation, let's say सॉलिड स्टेट में आपका एल्यूमिनियम कॉपर का अलॉय सिस्टम है. तो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उसमें Al2CO प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं मैट्रिक्स में. So this formation of precipitates, will it be a first order transformation or a second order transformation? रहा। The फर्स्ट second फर्स्ट order because it will occur slowly. Think again. What I said about first order transformation. Precipitation is a first order transformation, right? Talking about the diffusionless transformation, the Martin-Schiff transformation, is it a first order transformation or a second order transformation? वहां पे तो डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए या सेकंड ऑर्डर होना चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर क्योंकि एफसीसी टू बीसीटी हो रहा है, एटॉमिक अरेंजमेंट में चेंज हो रहा है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है बट एटम्स का डिफ्यूजन तो नहीं है. योर आंसर इज करेक्ट, फर्स्ट ऑर्डर है, बट रीजन क्या है उसका? थिंक अगेन. ठीक है, थोड़ा सोचना है इसे. ओके. अच्छा, नाउ, हाँ, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, difference between first order and second order. I will give you 3 to 4 differences between first order transformation and second order transformation. But first, please tell me how the graph between G and T of second order transformation will look like. Will it be more gradual, or will it be like drastically changing? So the answer is it won't change drastically. The change will be gradual. I hope everybody is noting down, because ये ग्राफ्स आपको बाद में किसी भी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं. मेरे से तो डीआरडीओ में पूछ लिए थे, इसलिए मैं सोचा मैं आप लोगों को भी शेयर कर देता हूँ. या टेल मी, एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसे दिखेगा? क्विक. Why there is sharp or drastic change in first order and gradual change in second order? What's the reason? हाँ, आई विल कम टू द नेचर ऑफ दिस. वो हम जब डिफरेंसेस में बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की,
तो तब हम आएंगे, बट इनिशियली यू टेल मी दैट हाउ दिस ग्राफ विल चेंज बिटवीन एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। फर्स्ट ऑर्डर में तो ड्रास्टिक चेंज है एट क्रिटिकल टेम्परेचर, सेकंड ऑर्डर में ग्राफ कैसे दिखेगा बताओ। एनी वाइल्ड गेस? सो इट विल बी बेसिकली चेंजिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो आपको शार्प ट्रांजिशन, दिस शार्प ट्रांजिशन दैट यू कैन ऑब्जर्व इन केस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन, इन सेकंड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन, if I tell you that the this entropy graph which is shown, it will be changing like this, like ये जो गैप आपको दिख रहा है ना फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर के केस में आपको एक गैप नहीं दिखेगा, देयर विल बी अ कॉन्टिन्यूटी। अच्छा, इन केस ऑफ सीबी वर्सेस टेम्परेचर और सीपी वर्सेस टेम्परेचर, लेट अस कॉल इट सीपी और सीबी, ओके। In case of first order, you can say that, you can like see that, right? You can see that there was not much discontinuity. But in case of second order transformation, we see that there is much discontinuity in this graph. Sorry, I will draw it again. It's not clear. Yeah, right. So I hope everybody has drawn the graphs. Now just compare the value of the change of free energy with temperature, the value of change of entropy with temperature, and the value of change of Cp or Cv with temperature for both first order transformation as well as second order transformation. And yeah, just now we will gonna analyze it, that why such a change is there. As I said, some of the examples of first order and second order, and your homework is Martin-City transfer. I already, the answer was given by one student that it is a first order transformation, but why, like what's the reason of Martin-City transformation being called a first order transformation even when the diffusion is not involved. So think about it when you are enjoying the rain, sipping your coffee, sitting beside the window. Think about it. Okay. Hmm. Achha. Now, talking about the first order and the second order, thermodynamically, हम क्या, I hope everybody has drawn it. If कोई ग्राफ अगर किसी का मिस हो गया होगा तो you can WhatsApp me anytime, right? Okay. Anyways, so now talking about it, in case of first order transition, we generally say that del G by del X is equal to 0. So this is the first order transformation, right? And for the second order transformation, we generally say that del square G by del X square is equal to 0. Now the question arises, what is this X? This G is fine. This X is any concerned thermodynamic parameter. Okay. Suppose if I'm talking about the liquid to solid transformation, if I see the graph between G versus T, the graph between G versus T was, how did it look like? There was a sharp transition, right? There was a sharp transition.
But in case of graph between G versus T, in case of second order transformation, there was a gradual change at the critical temperature. So basically अगर मैं यहाँ पे x को t से रिप्लेस कर दूं, तो यू कैन सी दैट कि आपका वो जो पैरामीटर है, रिस्पॉन्सिबल थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन will be equal to zero at the critical temperature in case of first order transformation, and the second order differentiation will be equal to zero in case of second order transformation. तो अगर आपको अपने कंपनी, देखो कॉलेजेस में जो कंपनीज आती है उसमें तो पूछा नहीं जाता है, बट अगर आपको किसी पीएसयू के इंटरव्यू में पूछा गया दैट व्हाट इज, हाउ कैन यू describe this first order how what's the basic difference between the first order transformation and second order transformation, will you be able to explain it? The first order differentiation will be zero in case of first order transformation, like when we differentiate free energy with respect to the concerned thermodynamic parameter, and in case of second order transformation the second order differentiation will be zero. इतना हर कोई बोल लेगा, राइट? अरे हाँ ना, कुछ बोल दो यार, सब सब नाश्ता कर रहे हो Yes. लगता है क्लास अटेंड करते हुए, राइट? ओके ओके ओके, एनीवे एनीवे, अच्छा, yeah, one thing was we saw the graph of Cp versus T for the first order and the second order transformation. I am gonna give that student 100 rupees if he or she is gonna tell me कि वो Cp versus T में फर्स्ट ऑर्डर में वो हल्का सा वेरिएशन क्यों आ रहा था और सेकंड ऑर्डर में वो ड्रास्टिक वेरिएशन क्यों आ रहा था. कम ऑन, 5 मिनट्स. 5 मिनट्स नहीं, ज्यादा हो जाएगा तो सब गूगल कर लोगे. 1 मिनट बताओ. I'm giving all of you 1 minute to think about it. Why that value of Cp was, and don't write in the chat box, please unmute and answer. That why there was a slight change in case of the Cp in case of the first order transformation, while in case of the second order transformation there was a drastic change in the value of Cp or Cv. It's just for your interest. इतना deep में किसी भी interview में जाते नहीं है. Just for your interest, you must know it. Unmute करके बोलना, हाँ. 1 मिनट है, 1 मिनट है. कमन कमन कमन, अरे 100 रुपए मिल जाएगा यार, सुबह सुबह मिल जाएगा पैसा. चलो बताओ बताओ. So first I have a question. Is a second order transformation related to solid transformation? Not necessary. Not necessary. आपका सॉलिड टू सॉलिड हो सेकंड ऑर्डर, ये भी नेसेसरी नहीं है. ठीक है. Most of the examples suppose when I talk about the spinoidal transformation, yes, in case of spinoidal transformation it's obviously a second order transformation. तो वहां पे सॉलिड टू सॉलिड होता है, बट इट इज रियली नॉट नेसेसरी कि सॉलिड टू सॉलिड में ही सेकंड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन हो, राइट? There are examples in which let's talk about ferrofluids. Anybody know here about ferrofluids? What are ferrofluids? Basically in organic solvent you disperse nanoparticles of iron. ठीक है. तो वो जो नैनो पार्टिकल्स ऑफ जो आयरन होते हैं, वो नैनो पार्टिकल्स ऑफ आयरन, if the temperature gets increased, those nanoparticles reorient themselves in order, they reorient themselves because there is a change in ferromagnetic to paramagnetic, right? There are certain mobile companies, उसके अंदर एक्चुअली है क्या? Those smartphones are basically the coolant system within those smartphones are taking the advantage of these ferrofluids. आपने मोबाइल ज्यादा यूज किया, मोबाइल का टेम्परेचर बढ़ गया,
तो वो जो फेरो फ्लूइड्स है वो फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। तो उस वजह से द अरेंजमेंट ऑफ दोज आयरन नैनो पार्टिकल्स बिकम्स लाइक दिस, कि वो मोबाइल के अंदर ही वो नेचुरल कूलिंग देने लगता है। ठीक है, I must not say natural cooling. It is like what to say. This magnetic transition is the reason behind this technology of you know these smartphones who say that our mobile phones, they don't get heated. Okay. Anyways, metallurgy has a big role to play there also. So yeah, back to the question. Back to the question. या सीपी वर्सेस टी का किसी को नहीं मिला आंसर, कोई बात नहीं, गया तुम लोगों का 100 रुपए। सी, whenever I talk about सीपी वर्सेस टी, आप क्या देख रहे हो? लाइक सीपी वो वैल्यू आ कहां से रही है? जो सीपी की जो वैल्यू है वो कहां से आ रही है? एक एटम को कंसिडर करो, कंसिडर अ सिंगल एटम, it is having certain degrees of freedom, right? So in first order transformation, if with respect to temperature, if that basically the degrees of the freedom in case of the atom is changing, what it is basically increasing, the degrees of freedom of vibration of that atom is increasing with respect to temperature in case of first order transformation. I had a small इसलिए idea about it. Basically, बोलो। I had a small idea about it. That's why I asked. Is it about soil transformation? Okay. So in case of second order transformation, वो degrees of freedom of vibration में एक drastic change आता है, right? And that's why when you see the slope of CP versus T, there is this gap. समझ रहे हो? वो gap आ जा रहा है वो at T is equal to TC temperature पे। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन। अगर ऐसा होता है कि यू नो इन केस ऑफ PSU interviews, especially in DRDO and BIRC, what happens now when you start answering all the questions, now they try to go into more and more deep, like into that particular concept, right? तो वहां पे ये पूछा जा सकता है, तो just for your information, just keep that thing in your mind. Okay. So yeah, am I missing something in case of phase transformation? Yeah, I'm missing something in case of phase transformation. I know 11 बज चुके हैं, तो जिसको जिसको भी भागना है वो यहाँ से भाग जाए। जो मेरे साथ और 5 मिनट रह सकता है, दे आर मोस्ट वेलकम। ठीक है भाई, मैं तो पढ़ाऊंगा चाहे तुम लोगों को पढ़ना हो या ना पढ़ना हो। या सो टॉकिंग अबाउट व्हाट्स अ फेज। एक फेज क्या होता है? One which is mechanically separable या inseparable? Come on. Sir, mechanically Separable. separable. Mechanically separable. Physically distinct or indistinct? Distinct. Distinct. And chemically? Homogeneous. Correct. Chemically homogeneous. तो मार्टन साइट को फेज बोलना ठीक रहेगा क्या? Is Martin site a phase? Yes, sir. Martin is a phase. बट अभी अभी तो तुमने बोला यार केमिकली होमोजेनियस, तो मार्टिन साइट तो यार मतलब उसको लाइक इन मार्टिन साइट some of the interstitial atoms are filled by carbon and some of the interstitial atoms are not filled by carbon, तो केमिकली होमोजेनियस कैसे हो गया? Metastable. अरे मेटास्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, that is an entirely different concept. What I am asking is, you told now a phase is, Martensite is a phase is chemically homogeneous. So all the interstitial sites should have been filled by carbon. But Martensite में तो ऐसा नहीं होता है, कुछ interstitial sites are filled by carbon, some interstitial sites are not filled by carbon. ये तो यार तुम लोग गलत आंसर दे रहे हो मुझे, बताओ। Your answer is correct. Martensite is a phase. It is a metastable phase, in fact. But how do you justify your answer?
बेसिकली फेज में हम एक मैक्रोस्कोपिक सेंस में देखते हैं, राइट? सो मैक्रोस्कोपिकली इट इज केमिकली होमोजेनियस, माइक्रोस्कोपिकली इट मे और मे नॉट बी होमोजेनियस, राइट? Okay, anyways. Acha, so when I talk about the phase, suppose if I am mixing A and B together to form a substitutional solid solution, any intelligent student of my class just tell कि अगर आपका मैकेनिकल मिक्सिंग होगा तो मान लो यहाँ पे A रिच है, यहाँ पे B रिच है, how this slope will vary with respect to the mole fraction, or how this curve will it be a straight line or will it be a parabola? चलो मैं दो बना लेता हूं। ये एक केस में मैकेनिकल मिक्सचर बन रहा है। मैकेनिकल मिक्सचर बोले तो लेट्स से सैंड सैंड एंड आयरन के पार्टिकल्स हैं, और एक केस में सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है। सॉरी फॉर माय स्पेलिंग, ये सुधार लेना प्लीज, करेक्ट दिस स्पेलिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशनल। मैंगनीज इज गोइंग टू बी मिक्स्ड विद आयरन। सो क्या लगता है, मैकेनिकल मिक्सिंग में स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा? सब्स्टिट्यूशनल में स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, क्या होगा बताओ? अच्छा, सैंड और आयरन को सॉलिड सॉल्यूशन बोलना ठीक है क्या? नो सर। क्यों डिपेंड क्यों करेगा ना क्यों हम मैं लोग। हाँ, क्यों क्यों फेज उसको उसको ऐसा मैकेनिकल मिक्सचर क्यों बोल रहा हूँ, सॉलिड सॉल्यूशन क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं? सर डेफिनेशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन क्या है कि वो हम्म। सेपरेबल, मैकेनिकली सेपरेबल नहीं होना चाहिए, और उसको हम सेपरेट कर करेक्ट सकते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट, तो ठीक है, तो ये चलो, वेरी गुड वेरी गुड, आई वाज नॉट होपिंग इट, बट आप लोगों ने तो यार, आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हो यार, नाइस नाइस नाइस। ओके, सो आई गेस आई हैव अ वेरी लिटिल स्टॉपिंग टाइम, सो मैं जस्ट एक रीजन दे के छोड़ दे रहा हूँ। तो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई दिस गैप इज बिटवीन, मतलब मैकेनिकल मिक्सचर के केस में एक स्ट्रेट लाइन है और सब्स्टिट्यूशनल के केस में ऐसा डिप हो रहा है, पैराबोलिक कर्व बन रहा है, तो ये जो गैप है ये क्यों आ रहा है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस गैप? ये जो डेल्टा जी जो बन रहा है, ये डेल्टा जी ये क्या डिनोट कर रहा है? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बन गया तो आपका डेल्टा जी मिक्स आया। ये डेल्टा जी मिक्स क्यों आया? डेल्टा एच मिक्स की वजह से आया या डेल्टा एस मिक्स की वजह से आया? कम ऑन, विच इज द डोमिनेंट पैरामीटर? आई एम टॉकिंग अबाउट एन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है? तो डेल्टा एच मिक्स की वजह से आ रहा है या डेल्टा एस मिक्स की वजह से आ रहा है? इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन वी नो दैट डेल्टा एच मिक्स इज जीरो, तो ये आंसर भी मिल गया। तो डेल्टा एस मिक्स की वजह से आ रहा है। Why, on forming substitutional solid solution with respect to a mechanical mixture, why this change in delta S mix is why this concept of delta S mix is coming into picture? टेम्परेचर तो सेम चेंज हो रहा है, मैकेनिकल में भी और सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में भी, तो थर्मल एंट्रोपी इज कॉन्फ़िगरेशनल नॉट द एंट्रोपी, आंसर। कॉन्फ़िगरेशनल यस यस, एंट्रोपी। कॉन्फ़िगरेशन एंट्रोपी, वेरी गुड। सो तो जल्दी से फटाफट 30 सेकंड्स में बताओ, ये कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी क्या होता है? व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी? सर कॉन्फ़िगरेशन एंट्रोपी इज On omega, I don't remember the rule. बोलो 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 बोलो। अरे यार दोनों बोल लो एकदम, आज लड़ाई हो जाने दो पूरा, बोलो। सर सर फॉर्मूला तो सर के बी एल एन ओमेगा होता है, बेसिकली उसको हम हाउ मेनी डिफरेंट वे वी कैन अरेंज। करेक्ट करेक्ट राइट, सो वो जो डिप आ रहा है कर्व में, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी। तो एटॉमिक लेवल पे आप डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में कितना मिक्स कर सकते हो वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है? नाउ सो बिफोर एंडिंग द क्लास, आई वांट ऑल ऑफ यू टू वर्क ऑन इट कि
फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन और सेकंड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आप सबको खोज के लाने हैं. Okay, so before starting the next class, we will discuss those 3 points first. ठीक है? Okay, so I'm ending the session. Thank you. I love this audience, very interactive audience. Nice, intelligent people. Okay, bye bye. Thank you so much, Sanjay. बाय बाय सर. नहीं मतलब मैं हूँ यार, तुम लोग मुझे ही भगा दे रहे हो यार, गलत बात है. हाँ, yes sir, विशाल sir, please. Thank you so much, Sanjit, for giving your valuable time. And guys, we will try to organize one more event or one more live class session like this. So you will get notification on WhatsApp. So save our WhatsApp number, and we will update our status on WhatsApp. So our WhatsApp number is 9509939058, and you can check it on findmytest.com also. And I hope next class will also be held as soon as possible. And we request you, all of you, like इस तरह से अगर क्लासेस चलती रहेंगी तो मजा नहीं आएगा कि 10 दिन में 15 दिन में. अगर आप 15 to 20 स्टूडेंट्स रेडी हैं लाइव क्लास के लिए, तो हम एक नॉमिनल सा फीस चार्ज करेंगे, उससे ज़्यादा फीस चार्ज नहीं करेंगे, और उसमें आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे. सो अगर 20 स्टूडेंट्स होते हैं देन वी विल थिंक अबाउट इट. अदरवाइज हम इसी तरह के सेशंस लाते रहेंगे वीकली या फिर 10-15 डेज में, बट आई डोंट थिंक कि उससे आपका पूरा कोर्स हो पाएगा. ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स, एंड बेस्ट विशेस फॉर गेट 25. And yeah, one more thing is, whoever will be joining in the next class, प्लीज आप लोग जो टॉपिक, अगर आप में से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो वो मुझे बताना. जैसे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैंने खुद से चुना था, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताओ कि आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो. ठीक है? हाँ संजीत, उसके लिए हमने क्या ना फॉर्म अभी बनाए हैं, वो सभी जो भी आज अटेंड किए हैं उनको सबको भेज दिया जाएगा. और ओके सर. उसमें वो टॉपिक लिख सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे वो नेक्स्ट क्लास चाहते हैं, बट वो नेक्स्ट क्लास का वो ओके ओके अपन डिसाइड करके फिर उनको बता देंगे. ओके ओके सर. ओके सर. ओके सर. Yeah, okay, now let's end the session.